Okay, so hi guys, मेरा नाम सौरभ है. I like to make content on cloud DevOps, Kubernetes in general. So आज की ये वीडियो थोड़ी सी स्लाइटली डिफर होगी. डिफरेंट इन द सेंस क्योंकि हम इसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे रिगार्डिंग ओपन स्टैक. ओके, so those who don't know what is OpenStack is a open source cloud computing infrastructure platform. This is the open source software which you can install into your own infra. आप अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद के सर्वर्स में, खुद के सिस्टम्स में इसको इंस्टॉल करके सेम पब्लिक क्लाउड की फीचर्स आप ग्रैपल कर सकते हैं. ओके, इसके अंदर सारे के सारे EC2 यानी इंस्टेंस, की पेयर, नेटवर्क, सबनेट, क्यूबरनेटिस, सब चीज इंफ्रा डिप्लॉय हो जाता है और आपको वो सेम AWS या GCP या जितने भी पब्लिक क्लाउड है उसके एक ओपन सोर्स अल्टरनेटिव ये मिलता है. ये बहुत ही पॉपुलर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसको मल्टीपल वेंडर्स अडेप्ट करते हैं, चाहे वो रेड हैट हो या कोई भी दूसरे वेंडर्स हो. ओके, द थिंग इज मैंने जब प्रीवियसली इस ओपन स्टैक को यूज़ करा था अपने इंफ्रा में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, और या जब भी मैंने अपने लोकली भी टेस्ट करा था, द वन थिंग विच इट लैक्स इज द मॉडर्न UI. द ओपन स्टैक डैशबोर्ड विच इज कॉल्ड होराइजन. अगर आपको ओपन स्टैक डैशबोर्ड के बारे में नहीं पता, इट्स कॉल्ड होराइजन. It's called Horizon. Okay, this is the dashboard. This is the OpenStack dashboard, which is a very minimalistic dashboard जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलते. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो इसके अंदर सबसे लैक फीचर्स है, दैट इट डजेंट शो यू द प्राइसिंग. Okay, for example, if you are working on the AWS infra and you are deploying multiple resources, for example database, for example VPC, subnet, so on and so forth. So ये उसके प्राइसिंग को नहीं दिखाता है. Okay, so let me just open the dashboard first. So I have a OpenStack install in my server. So this is the OpenStack vanilla setup. आप इसमें लॉगिन कर लीजिए अपने यूजर नेम के साथ और अपने जो भी आपका क्रेडेंशियल है उसके साथ लॉगिन कर लीजिए. And you will able to see this is the plain infra which comes out of the box in a default manner. Okay, so यहाँ पे आपको overview, instance, images, key pair, server groups, so and so forth आपको features मिलते हैं. The thing is it's lacking, it's not modern UI. For example, if a customer want a modern UI which have a simplistic overview that a normal non-technical user want to check how many resources is created into our OpenStack cloud, private cloud, as well as the pricing mechanism also. For example, अगर मेरा कोई सर्वर है, मेरा कोई वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर n number of टाइम तक चल रहा है, n number of hours तक चल रहा है, then how that pricing will be calculated. मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा. So for that I just created a simple dashboard, or you can say simple web application, और उसका जो कोड है आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओपन स्टैक ओवरव्यू में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट जस्ट कॉपी दिस थिंग and copy whatever the git URL you want to use, SSH or HTTP. Right now, since it is a public repository, I'm just using the public HTTPS link. So I'm just opening the terminal. So this is the terminal I have opened, and go to any directory, whatever you want to use, and I'm just typing git clone / and this thing that connection URL. Okay, just I'm putting the enter, and you just open the OpenStack overview. Okay, so same मेरी पहले की वीडियोस की तरह इसके अंदर भी एक बैकएंड का, फ्रंटेंड का और एक docker compose.yml का एक मॉड्यूल मौजूद है. And the thing is, it actually lacking that a env file, a secret file, which have a ability to talk with this web application to the OpenStack cloud. Okay, so I'm just creating the .env, and I'm just putting the connection URL. Okay, this is my connection URL. Sorry, this is the connection URL. Means मेरा जो OpenStack का जो IP है वो ये है 192.168.1.71,
this is the auth URL. This auth URL means 192.168.1.5000/v3. It is a keystone authentication URL. यूजर नेम पासवर्ड रीजन में बाय डिफॉल्ट डाल दिया और उसके अंदर मैंने बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन और फ्रंट एंड की कॉन्फ़िगरेशन भी डाली है कि बैकएंड का जो एप्लीकेशन का नाम होगा वो app.py होगा, उसका एनवायरनमेंट डेवलपमेंट होगा, JWT टोकन का जो सीक्रेट की होगी वो कुछ भी आप रख सकते हैं, और फ्रंट एंड का जो मेरा पोर्ट होगा वो लोकल होस्ट 5000 पर रन होगा. ओके, सो जैसे ही आपने ENV सेट कर दिया, यू ओनली नीड अ डॉकर एंड यू ओनली नीड अ डॉकर कंपोज. Only that. You have to just put docker compose up minus d. Up means initialize all the container, and up all the container. Hyphen d means detach. After running the container successfully, just detach it. Enter मारिए. So it will just create two container. One is backend and second one is front end. You can able to check all the logs, whatever the logs you have in your particular container. You will see my OpenStack auth URL, my OpenStack project name and region name is successfully factored into my OpenStack resources overview web application. Okay, so just wait for a couple of seconds. Yeah, just wait for a couple of seconds. So it will automatically pop out our entire web application which have all the data. You will see it is in a compiling state right now. Okay ji. So let me just check into our browser. Localhost पे क्लिक करता हूँ मैं, localhost colon 3000. Since I have my application is running on 3000, docker ps करके आप चेक कर सकते हैं. So this is my application colon 3000. So I'm just putting localhost 3000. Enter मारिए. So you will see a OpenStack Cloud web application has been successfully opened in my browser. Just same password which you have put it into your into the ENV, just the same thing you need to put into this account also, this web application dashboard also. Okay, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरा जो यूजर नेम और पासवर्ड वाला जो मॉड्यूल था वो प्रॉपर्ली यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, and it will automatically fetch all the resources from my cloud. Okay, let me just wait for a couple of seconds. You will see it is a very simple web application. I have put a dark theme, light theme, both options. You can choose whatever you want to use. It will tell you what is the total infrastructure cost, कि आपके अभी OpenStack Cloud platform पे कितना cost अभी currently जा रहा है. It will show all the things, for example instance, networks, volumes, images, key pairs, as well as how the pricing will be calculated. Okay, you will see infrastructure cost calculation method. M1 large, M1 medium, M1 small, M1 tiny. These are the instance type, and these instance type have these kind of module. For example, 40 रुपए प्रति घंटा, 40 rupees, 40 INR per hour, and 20 rupees per hour, and this kind of thing. You can mold it according to your use case. Okay, I'm not hard coded it, so you can, because since the entire application and this entire code is open source, you can do whatever you want with this code. Okay, so let's just check it that if let's just say if we created some virtual machines into our OpenStack environment, so it will automatically fetch into this dashboard or not. So हम चलते हैं अपने OpenStack के cloud पे management dashboard पे. I'm just putting that cost test server. I'm just putting this virtual machine 5 or 4, whatever the thing you want to use. Just putting the flavor, whatever the network you want to choose, just choose that, and yeah, launch the instance. Okay, there's a thing called source ID. Source ID missing है, एक मिनट. Just a second. So I have name the instance cloud server, source it, image I have choose that, flavor I have also choose that, networks I have choose that. Just click on launch instance, and if everything is working properly, then we should have all the instances running properly. Okay, so हम check करते हैं, हम अपने infrastructure cost में check करते हैं. हम यहाँ पे refresh का बटन दबाते हैं.
you will see all the instances actually fetch from my OpenStack auth URL, or you can say keystone URL, और इसके अंदर जितने घंटे या जितने हावर्स ये सर्वर्स ऑन रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट my infrastructure cost will be propagated. Okay, you will see, just refresh the server, you will see it is right now in an active state. There are some server which is in a build state, or some servers in an active state, and according to the hours, these cost will be propagated. Okay. You can choose dark theme as well, and networks you can choose. You can see whatever the network you created on your OpenStack platform, automatically it will propagate it into this dashboard as well. Volumes, sender volume, whatever the sender volume, and or how much of sender volume created, it will also according to the rule which you set into this application, it will automatically propagate it. Okay ji. Images, right now I have only one images. If you have multiple images, it will propagate according to the use. For example, key pair, right? Just check our key pair functionality, because it is a small functionality. We can choose, we can check that. Just create a key pair. For example, cloud SBR key. Okay जी. SSH key इसकी रहेगी. Create a key pair. I don't want to get the PEM file because I need to check only the functionality. मैं इसको refresh करता हूँ. Right now you will see only 2 key pair is there, and you will see one cloud server key pair automatically fetch it out. Okay, so it has a very good capability of your monitoring your entire infrastructure. Okay, मैं पहले जब भी OpenStack को मैं डिप्लॉय करता था मल्टीपल वेंडर्स के लिए या अपने लोकल में भी सेटअप करने के लिए, देन दिस बेसिक फीचर ऑलवेज लैकिंग. Even though there are multiple OpenStack services is there, but these kind of dashboard doesn't give it. OpenStack doesn't give you out of the box. Okay, you will see you can customize it according to use. Okay, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने घंटे के हिसाब से कितने रुपीस of your infrastructure cost is calculated or propagated. Okay, so yeah, this is for all guys. I hope आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी. The best thing is that the entire application is written into all the in all the open source framework, because मैंने backend के लिए Python Flask का यूज करा है और UVCon की मदद से इसको रन करा है, और जितने भी Python के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, Python OpenStack के CLI होते हैं, उसको मैंने यूज करके पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाया है. मेरा फ्रंट एंड बहुत ही ईजी है, टाइपस्क्रिप्ट पे बना हुआ है, और ये अकॉर्डिंग टू आवर बैकएंड पॉलिसीज एंड मॉड्यूल्स ये फ्रंट एंड मुझे प्रोपेगेट कर रहा है. Okay, the best thing about that, you can also integrate it with the Razorpay. आप Razorpay के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. So if let's just say our user want to pay according to their uses, he can just put a payment option here after the pricing thing. You just add a payment option, और सब क्लिक करके a Razorpay will be popped out, and you can and he can actually pay according to the reference. Okay, so I think it is a very good project according to my thinking. इसको आप क्लोन करिए, अपने इन्वायरमेंट में सेटअप करिए. इफ यू हैव अ OpenStack environment and you want to play with it around, or if you want to learn something more about it. So yeah, so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and bye.